myself Gazia from News Moment. Welcoming to you News Moment English. Play smart, play epic with PSJ TVS Asansol. For more details, please call 8695607709 and our toll-free number 180012339999. Four workers were trapped in Shyam Oil Factory located in Mangalpur Industrial Area of Raniganj, where 3 workers were died and 1 was rescued. Now let us have a full report from Vikas Prasad, Pawan Sharma from Raniganj and Twinkle Barnawal. In Mangalpur of Raniganj Police Station, area of Asansol, a major accident occurred due to the fall of a tanker laden with a private sponge iron factory. According to local sources, 4 labor got buried under the ash tanker. The fire brigade and police reached there as soon as the news of the accident was received. He started the rescue operation. Somehow, a worker named Shivnath Ram could be saved, but still others, the other 3, Tanmay Ghosh of Ballabpur in Raniganj, Dilip Gop of Harishpur in Andal, and Shiv Shankar Bhattacharya, resident of Palasdanga, Bankula, could not be saved in this accident so far. He is primarily presumed dead. The workers told that the incident happened late at night. 4 laborers were working under the tanker. Suddenly, a big iron tanker fell on them. The workers alleged that the authorities were already informed about the danger posed by the tanker, but the factory official did not listen to one. The workers demanded jobs and compensation for the dead. During this, the police and fire brigade are running the rescue operation. He told that and fire should be lodged against management of the factory. Let us hear what he said. এরা চিরকাল এইরকম করে মানুষগুলোকে শোষণ করে, তাদের প্রাপ্য পাওনা দেয় না। আজকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ত্রুটির জন্য, তাদের রেগুলার মেনটেন্সের অভাবে এইটা ভেঙে পড়ে গেল। তার নিচে 3 জন জীবন্ত ছেলে, জঞ্জান্ত ছেলে, তাজা ছেলে মায়ের কোল খালি হয়ে চলে গেল। এই সব কারখানাগুলো এই মঙ্গলপুরে যারা আছে তাদের রেগুলার এই ফিচার। তারা যদি দালাল রাখে, আমাদের মতো কিছু দালালকে তারা পোষে, এটা বলতে আজকে বাধ্য হচ্ছি। ঝান্ডা নিয়ে দালাল কিছু আছে, তারা মালিকদের পরিবেশ থেকে আরম্ভ করে শ্রমিকদের শোষণ থেকে সমস্ত কিছু তারা সাপোর্ট করে। আজকে দালালদের জন্য এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ত্রুটির জন্য 3টে মানুষের প্রাণ চলে গেল। আজকে ম্যানেজমেন্ট কি করতে হতে? আচ্ছা, 3 জন মারা গেছে, ওদের পরিবার জন্য কি করা হচ্ছে এখন? সেটা পরেই বাবা, সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, সেটা দেখা যাবে। কিন্তু এটাকে দীর্ঘদিন চলতে থাকবে, এইগুলোকে দীর্ঘদিন করে চলতে থাকবে। এখন কি করণীয়? এখানে করা যায়, প্রাথমিক হচ্ছে দেহগুলো উদ্ধার করা, তারপর পরবর্তীকালে ওদের যে প্রাণের মূল্য তো হয় না, তার জীবনের মূল্য তার হবে না, সেইটা কিভাবে তাদের কম্পেনসেট, প্রাণের বিনিময়ে কোনো কিছু দিয়ে কম্পেনসেট হয় না। তো পরবর্তীকালে পরিবারগুলো যাতে ভেসে না যায় তার জন্য স্থানীয় প্রশাসন আছে, তারা দায়িত্ব নিচ্ছে। আমি তো এই কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত, কারণ তার নিরাপত্তা জনিতের জন্যে, তার পরিকাঠামোগত ত্রুটির জন্যে এই 3টে তাজা প্রাণ আপনারা দেখুন, ওটা ভেঙে পড়ে গেল। রেগুলার করছে, মেনটেন্স হতো, তাহলে ভেঙে পড়তো না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা মারা যায়নি, কোম্পানি গাফিলতিতে মারা গেল। তাহলে কেন তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে না? আমি প্রশাসনের কাছে দাবি করছি, তাদের যারা দায়িত্বে ছিলেন, আধিকারিক যারা, তার দেখার দায়িত্ব, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হোক, তাদেরকে অন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রেপ্তার করা হোক বা কিছু করা হোক। Asansol Durgapur Police ACP Central Tathagata Pandey said on Saturday morning that 1 person had been rescued. Other workers at the factory claimed that 3 people may have been trapped on the floor. Police seized a huge amount of jewelry from bus in Asansol. 2 were arrested from Jharkhand.
On the basis of a tip off in Jubilee Mall area under Asansol North Police Station, police raided the bus coming from Hazaribagh to Asansol and arrested 2 people. The raid was led by ACP Central Marvinder Das. Among the arrested people, Mohammad Badruddin and Mohammad Irfan of Hazaribagh were challaned in the Asansol court, where Irfan has been taken on remand for 4 days. In this, about 5 kg of silver ornaments, 21 kg of copper wire and similar to brass, and some ornaments look like gold, which will be confirmed only after investigation. It is said that these people were coming to Asansol from Jharkhand with this item. Someone had to be delivered to the rail park. Two additional divisional managers have been appointed in Asansol Railway Division. Chief from Eastern Railway Headquarters in Asansol Railway Division, Vigilance Officer B.K. Tripathi, has been promoted and appointed as Additional Divisional Railway Manager 2 of Asansol Railway Division. Now 2 additional Division Railway Managers have been appointed in Asansol Railway Division. ADRM B.K. Tripathi told, I have worked in Railway Division as a civil engineer. After that, now I got a chance as an administrative officer. I will pay special attention to the problem of passengers in the entire Asansol Division. On behalf of the department, we will have special emphasis on the work of development in Divisional Rail Hospital as well as in Asansol Railway Station or at various stations of Asansol Division. Physiotherapy Clinic for male and female at Sripalli G.K. Roy Sarani, Rupam Building, Asansol, near Upendra Nath High School. Report from our working editor Vikas Prasad from Purulia. In Chandanpur village of Puncha police station area of Purulia district, the body of a missing woman named Meenu Gorai was found buried in the soil on Friday. However, his head was not found till the time of writing this news. The mystery of the woman's death has stirred the area. It is learned that the woman was missing since last Wednesday. According to local sources, a woman resident of Chandanpur village of Puncha police station area went out to harvest paddy in the field but did not return home. The woman's name is Meenu Gorai. The family had lodged a complaint with the local police station regarding the mysterious disappearance of the woman. Then on Thursday, the Puncha police station conducted a search in the forest adjacent to Chandanpur village of the police station area, and finally on Friday morning, the body of the woman was found buried under the ground. The police was successful in recovering the body but have not found able to recover the woman's head so far. Heavy police force have been deployed in the forest area. The cause of the mysterious death of the woman is being vigorously investigated. Angel Vidya Mandir, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079. Let's have a look on a coronavirus update. India added 10,549 new coronavirus cases and 488 fatalities in the last 24 hours, pushing the country's cumulative cases to 3,45,55,431, while the death count climbed to 4,67,468. The Health Ministry said today. Active cases in India now stand at 1,10,133, the lowest in 539 days, and comprises 0.32% of total infection. The national recovery rate stands at 98.33%, the highest since March 2020. The daily rise in new coronavirus infection had been below 20,000 for 49 straight days, and less than 50,000 daily new cases have been reported for 152 consecutive days now. India has administered
over 120 crore COVID vaccine doses till date. However, several nations worldwide, including India, have expressed concern amid reports of a new COVID variant surfacing, identified first in South Africa and already spreading to its neighboring countries, including Botswana. This variant has now been detected across the globe in Hong Kong and Israel as well, and is said to be much more infectious than the Delta variant, the most heavily mutated version of coronavirus discovered so far. In response, several countries, including the UK, Singapore, US, and the EU, have banned travel from South Africa, as the World Health Organization named the new variant Omicron a variant of concern. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 98328 24975. From Goa to Tripura, the people of Trinamool were roaming around with sacks of money. But no one wants to come. Trinamool is getting some retired leaders included. Trinamool has become a rehabilitation center. The tainted accused of Trinamool was sent to Tripura, like they treated us by keeping the police behind here. Similarly, the people there have also surprised him. At first, it is wet, from behind it has become yellow. Central BJP co-president Dilip Ghosh said this while participating in a rally on party's program against police terror, corruption of Trinamool government and non-cutting of petrol and diesel prices in Jaipur, Purulia. On this day, BJP leaders and workers and supporters took out a procession from Jaipur College Mode. MLAs including MP Jyotir Moy Singh Mahto and District BJP President Vidya Sagar Chakrabarti were present. Biofena. Drink healthy and stay healthy. Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. Malai Ghatak, Acting Minister of Law and Public Workers and MLA of Asansol North Centre, is the chairperson of the district level selection committee of West Bardhaman District Health Department. Mission Director Dr. Sumitra Mohan, IAS among the 26 districts. The name of Malai Ghatak, Minister of State for Law and Public Works, has been announced as the chairperson of the district level selection committee of the Health Department of West Bardhaman District. There is a happy atmosphere among the well-wishers. Everyone is greeting on social media. West Bengal Urdu Academy has organized a press meet in its premises Asansol today relating to its library and coaching for WBCS for Urdu medium students. Dignitaries present were Professor Dabir Ahmad, Talat Shamid, Miss Nusrat Zainab, Naseem Azizi, Khurshid Ghani, Engineer SM Haider. Let us have their views. शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लाइब्रेरी कायम करेंगे। उसके लिए वो किताबों के खेप आ चुका है और बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ भेजते रहेंगे। उसके बाद फिर दूसरे शोबे का जो काम है वो हम लोग शुरू करेंगे। चूँकि कलकत्ते में इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, तो हम लोग वहाँ सब सरगर्म हो जाएंगे। इसलिए जनवरी के महीने से हम उम्मीद करते हैं कि पूरे तौर पर हम एकेडमी का काम यहाँ कर सकेंगे। बहुत सा और डेवलपमेंट है, जैसे WBCS के एग्जाम वगैरह, इसका हम सेक्रेटरी साहब तफसील बताएंगी। यहाँ से ही WBCS का जो उर्दू एकेडमी का होगा, एट ए टाइम कलकत्ता, आसनसोल, इस्लामपुर से हम लोग एक साथ एग्ज़ाम लेंगे। मज़ीद मालूमात इस सिलसिले में
हमारी सेक्रेटरी साहब हैं, नुसरत साहब हैं, वो आपको बताएंगे। दबीर साहब हैं, ये बताएंगे। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए उर्दू एकेडमी करवा रही है। इस साल से हम लोग चूँकि आसनसोल में हमारी बिल्डिंग अपनी कायम हो चुकी है, तो यहाँ पर भी इस साल हम लोग करवाएंगे। एक हम लोग एक्चुअली पूरी तैयारी से आए थे कि अनाउंस करेंगे और एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे। एग्ज़ाम जो है हमारा, जो रिक्रूट ये सिलेक्शन करते हैं, वो 12 दिसंबर को होना है। बट चूँकि कलकत्ता में कोई इलेक्शंस अनाउंस हो गया, तो एमसीसी की एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले लें एंड देन फिर हम लोग उसका बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है हमको। अदरवाइज़ हम लोग कल से ही यहाँ फॉर्म्स देना शुरू करते। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी जनवरी से रीडिंग रूम भी स्टार्ट करने का प्लान है। किताबें आ जाएंगी और चूँकि रीडिंग रूम करना है तो उसका अलग फर्नीचर आने की ज़रूरत होगी। तो ये सब भी चूँकि ऑस्टेरिटी है और बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब परमिशन हम लोग को जैसे जैसे मिलता जाएगा हम लोग यहाँ पे अपना काम पूरा करते जाएंगे। मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि पूरे मगरब बंगाल के लिए एकेडमी है और मगरब बंगाल के तमाम उर्दू तबका के लिए ये एकेडमी काम कर रही है, ज़मीनी सतह पर काम करना चाहती है। यही वजह है कि आज हम लोगों के आने का मकसद यही है कि आसनसोल में जो हमारा ब्रांच है, जो हमारी शाख कायम हुई है, इसके तहत हम यहाँ सबसे पहले, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया, कि लाइब्रेरी का इफ्तिताह करना चाहते हैं। कि अगर हमारे पास लाइब्रेरी नहीं होगी, हमारे पास किताबें नहीं होंगी, तो बच्चे इस्तेफादा नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि सबसे पहले बच्चे यहाँ आएँ, यहाँ जो किताबें मुहैया की जा रही हैं धीरे धीरे, उन किताबों से हमारे बच्चे इस्तेफादा करें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किताबें होंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पर किताबें मुहैया कर दी जाएंगी, ताकि ये आसनसोल ऐसे गिरदनवाह के जो बच्चे हैं, यहाँ आसनसोल है, रानीगंज है, रहमतनगर है, वगैरह वगैरह, कुल्टी वगैरह है, तमाम के बच्चे यहाँ करके इस्तेफादा कर सकते हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये फैसला कर लिया गया था कि हम लोग जो है 12 दिसंबर को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ उसकी शुरुआत करेंगे, फॉर्म्स दिए जाएंगे और उसी दिन टेस्ट बैक वक्त कलकत्ते में, आसनसोल में और इस्लामपुर में होना तय पाया था। लेकिन चूँकि ये सरकारी अदारा है और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कलकत्ते में, लिहाजा जब तक कि हम परमिशन नहीं लेते हैं, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया बिल्कुल सही, कि जब तक कि परमिशन नहीं लेते हैं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वरना फिर हमारे ऊपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट का मामला ये हो जाएगा। बहरहाल ये है कि हम लोगों ने तय कर लिया है, एकेडमी ने फैसला कर लिया है कि आसनसोल, इस्लामपुर, कलकत्ते में बैकवर्ड इम्तहानात होंगे। और ज़ाहिर बैकवर्ड इम्तहान लेने का मामला ये है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी हमारी, कि तमाम बच्चे जो हैं या तमाम बच्चियां जो हैं इस्तेफादा करें, उनकी जहन साजी करें, उनके जहन को हम लोग वो इल्म की ग़ज़ा फराहम करें, ताकि बच्चे हमारे जो है कामयाब व कामयान हो सकें। यही वजह है कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी आसनसोल जैसे इलाके में एकेडमी कायम करके और यहाँ लाइब्रेरी कायम करके फिर धीरे धीरे लहजा जो है हम और भी काम करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के तमाम लोगों का ताउन भी हमें हासिल होता रहेगा। इसलिए कि एकेडमी हमारी नहीं है, हम सबों की एकेडमी है, सिर्फ कलकत्ते वालों के लिए। बार बार हम लोगों ने यही कहा है कि तमाम लोगों की एकेडमी है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करें। लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए अभिनव गिनी हाउस में ज़रूर आएं। Asansol, under the welfare scheme of Chief Minister Mamata Banerjee, in the ADDA auditorium in Asansol, 160 families of Chatimdanga village, residents of Sripur area, were handed over a check amount of the 10,000 including housing papers and house keys under the hands of Minister Molai Ghatak. District Ruler Arun Prasad, Police Commissioner Sudhir Kumar Neelkant, ADDA CEO Nitin Singhania, Raniganj MLA cum LDA Chairman Tapas Banerjee, Jamuria MLA Hira Ram Singh were present on the occasion. Minister Molai Ghatak said that under the ambitious schemes of the Chief Minister, 160 families of Chatimdanga
of Siripur were provided new houses under the Rehabilitation Housing Scheme, in which the Chief Minister Mamata Banerjee herself has provided the voice of the house and other papers to 5 families with her own hands, and others were given residence papers, keys and a check amount of 10,000 to 160 families in the ADDA auditorium in Asansol. He said that Chief Minister Mamata Banerjee is giving benefits of various projects in Bengal. The people of Bengal are getting the benefits of schemes on a total of 74 ambitious, in which other schemes including Kanya Shri, Rupa Shri, Swasthya Sathi, Student Credit Card, Sabas Sathi, Lakshmi Bhandar were implemented. The people of which are getting the benefit of this for development in West Bardhaman district. Chief Minister Mamata Banerjee is benefiting the people here by bringing various types of schemes. If Bengal continues to develop in this way, then the day is not far when Bengal will become famous in the world. Bengal will be seen from the policy of development. Constitutional Day observed in Eastern Railway Division. Asansol, 26 November 2021. Constitution Day was observed in Eastern Railway Asansol Division today. Shri Parmanand Sharma, Divisional Railway Manager, Asansol Division, administered the preamble to the Constitution of India among the officers and staff of this division at Divisional Railway Manager's Office, Asansol, on the occasion of observance of the Constitution Day of India. Shri M.K. Meena, Additional Divisional Railway Manager 1, Asansol, and Shri B.K. Tripathi, Additional Divisional Railway Manager 2, Asansol Divisional Branch Officer and staff of Asansol Division of Eastern Railway were present in this pledge-taking ceremony. It may be mentioned that on 26 November in 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950. And at the end, now let's have our SMS of the moment. Let us love winter, for it is the spring of genius. Thank you for watching our video. If you like the video, then please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon for the further notification.